sub-sub. So it is not a significator of 2, 5 and 11. Venus is giving us 5 and 11, but Venus is in Jupiter star, not in 2, 5, 11. It is in Ketu, which gives me only 2, and it is in Jupiter sub-sub, which is again not in 2, 5 and 11, right? So without the appearance of 5, Venus cannot signify for the childbirth, because 2 and 5 are important. 2 is to be there along with 5, or 2 is to be there along with 11, or 5 has to be there along with 11. Now here main focus has to be on second cusp, right? So Venus cannot be taken as the star lord. It means that moon, I have to progress it to change the Venus star lord to the next one. Okay, and if I do it, so sun, it will sun. Sun. So if I do it, then sun will appear. Yes, sun will appear. One minute, sir. One minute, sir. Sir, chala munduku తీసుకెళ్ళాలి. Sun will appear. Now I am finding out the exact time. Sir, take it about 6 hours faster, sir. No, sir. Sun will appear on 23rd 9 2004 at 9:47 42:90. 9:47. Yes, 9:47 42:90. But it is on 23rd, sir. 23rd. 23rd. It is on 23rd 9 2004. Time is 9:47 42:90. Correct. Correct. 9:47. 40 290. सर आप कैसा कैलकुलेट कर दिए सर ये टाइम? ये टाइम सर नीचे जो है ट्रांजिट एडवांस बाय है ना, इसको पहले मैंने एडवांस किया, पहले इसको आवर्स में, फिर इसको मिनट्स में किया. सर कैसा मालूम होगा सर, कैसा मालूम होगा ये वाला एग्जैक्ट टाइम, आवर्स मिनट्स? చాలా ఈజీ సార్ అది. 26 డిగ్రీ ఇందాక మన ప్రసాద్ సార్ చెప్పినాడు కదా అది. सर आप देखो, मून विल ट्रांजिट इन सन साइन एट 26 degree 40 minutes. Exactly. You just change it to 26 degree 40 minutes over here. In the transit, change the moon in Sagittarius sign, degree, minutes and second, you change it to 2640. That's what you have done now, sir. Yes, that is what I have done. 2640, 01, and the time is 9:47 42:90. That's it. Next time when I am meeting with your class, I'll definitely give more emphasis on transit so that you can know how to do it. Yes, sir. Okay, thank you. Okay. Now here, okay, now what you find here, still this is not the exact time, because here we have to focus mainly upon moon and mainly upon the ascendant. Moon and ascendant are to be focused. Now here, moon is in sub-sub. Moon is in sun sub-sub. Am I right? Yes. And sun is nowhere in 2, 5 and 11. Therefore, I cannot keep the sub-sub as sun. So I have to progress the transit again by 1 minute each. And when I forward it by 1 minute each, then I am going to get moon, right? Now I will get moon at 9:51 to 290, same date.
9 hours, 51 minutes, 2 seconds and 290 milliseconds. I get moon. Moon is in Jupiter star. Moon has no PS. Therefore, moon cannot be taken as the subsublot. Again, I progress. Sir, just one thing, sir. Instead of doing all these things, it is better to check here ascendant sign lord Venus. Venus Sir, is sir, 2511. नहीं, sir, हाँ, वो तो बाद में करेंगे, sir. What is important here is that first I have to fix the transit of moon. Moon in a proper sign, proper star, proper sub and proper sub. Now, moon cannot be the sub of moon. Because moon is in the star of Jupiter and Jupiter is nowhere in 2, 5 and 11. So I have to change again, progress it further, and I have to change moon to the next sub. Mars. Yes, Mars. Mars is okay. I have to change it further. Let me see at what time it appears. Yes. It is still moon. ఇది ఇంకా జరుగుతా ఉంది. ఆయన వచ్చినాడు, ఇది ఆయన స్క్రీన్ కనపడంలా నాకు. ఎట్లా స్టాప్ just with. Yes, now it is. सर चार्ट शेयर करो साहब. अभी करता हूँ सर, 1 मिनट. Just a moment, sir. Okay. You do it. Now, on 23rd 9/2004, the sub-lord is Mars at a time of 9:56:38 to 90. 9:56:38 to 90. Okay. Now, moon is in Jupiter sign, sun star, sun sub, and Mars sub. It is okay now. Now here, I have now to focus upon the ascendant sub-lord. Ascendant sub-lord is Rahu. हाँ जी कही. Yes. चार्ट शेयर करो साहब. चार्ट मैं एक्चुअली सर इसमें लगाया हुआ अपने मोबाइल पे, और लैपटॉप में नहीं है. गूगल मैंने मोबाइल पे लगाया, लैपटॉप पे नहीं लगाया हुआ. मैं आई ज्वाइन थ्रू दी मोबाइल फोन. उसमें चार्ट नहीं है. The chart is on the laptop. I did not join from the laptop. Right? So it is 23/9/2004, 9:56:38 to 90. Now here the sub-lord is Rahu. Ascendant sub-lord is Rahu. Rahu is nowhere. Now if I am to focus here, yes. Ascendant sub-lord is Rahu. Okay. Now, if we look at the ascendant, the sign lord of ascendant is Venus. Star is Jupiter, sub-lord is Mercury, and sub-lord is Rahu. Rahu is connected to Sun because Rahu is Sun. Okay. Connection is there. Now here the problem is that Venus cannot be the sign lord of the ascendant. It should be changed. Yeah, because Venus is in the sub of Jupiter, so it cannot be sign lord of the ascendant.
Thereby we have to change Venus. Now if I change Venus, Venus will change to Mars at a time of Venus changes to Mars. Yes. Now the time is 10-19-51-290. 10-19-51-290. Venus has changed to Mars. So here now we need to match the sub-sublord with the moon star lord. The sub-sublord is Saturn. And Saturn is nowhere connected to Sun. Right, sir? The sub-sublord is Saturn, and Saturn is nowhere connected to Sun. So either I make the sub-sublord as Sun, or I change it to a planet which is connected to the moon star lord. The ascendant sub-sublord has to be connected to the moon star lord. Am I right, sir? Now if I change it further, Kapila Sir, can you change your camera to the reverse camera? Okay, that is fine. अब इसमें रिवर्स का साइन नहीं है. अच्छा सर. अच्छा, इसमें रिवर्स का साइन नहीं है. ये जो गूगल मीट में रिवर्स का साइन नहीं है. आ गया सर, अभी आ गया. रिवर्स साइन. अच्छा, ओके. हो गया. दिख रहा है सर, चार्ट तो दिख रहा है, मतलब एकदम छोटा दिख रहा है. छोड़ दीजिए सर. है ना, इसको we will discuss it. Virtually the time which I am likely to get, it will be close to 10:30, 31, 30 point something. Yes. The time is close to 10:30. 10:30, 19. 10:30, 19, 290. That is the time period we are going to get. Am I right? मूर्ति जी, टाइम क्या दिया हुआ है इसमें बुक का? किताब में 10:30 को पैदा हुआ कहते. 10:30, 19. 10:30, 19 है. मेरे पास 19 है. 10:30, 19, 290. The delivery was recorded as happening at 10:30. It is 10:30, 19. 10:30, 19. The time which I have recorded. It is 10:30, 19. (23, 9, 2004), 10:30, 19, 290. 21 seconds बाकी होगा सर. That is the time which I have got. कम हो गया. It is ascendant is Mars sign lord, Jupiter star lord, Rahu sub lord, and Mercury sub lord. Why not Jupiter instead of Mercury? Why don't you select Jupiter as a sub lord?
So Jupiter can also be selected. Jupiter can also be selected. Then Nothing wrong with it. Nothing wrong with it. Nothing wrong with it, sir. सर पहला बताइए वाला जुपिटर इज इन विच कंडीशन Sir, if we select Jupiter, it will be 10:28. 2 minutes पहले हो जाता है. 10:28, 10:28, अगर हम जुपिटर लें इसका 10:28 से 10:28:45 तक जुपिटर रहता, जुपिटर सब. Sir, we can Sir- take Jupiter also and still set Sir, Mercury as a नहीं सर, sublord. सर जुपिटर सब लॉर्ड कैसे लोगे आप? Actually, जुपिटर एज ए Jupiter सब as a लॉर्ड, graha cannot be taken, sir. Jupiter cannot be taken, sir. Jupiter is neither in 2 nor in 5 nor in 11. Now what is the Exactly. condition? That all the planets which co-rule the ascendant should be significators of 2, 5 and 11. Then how we have selected Jupiter as star lord? Sir, Jupiter as star lord, look here now, what happens, Murthy ji? Sometimes, you know, star lord will stay for a very long period of time. आप देखो अब इसमें क्या है, अगर आप फिफ्थ कस्प के आप जो कस्पल पोजीशंस देखोगे तो फिफ्थ कस्प के कोरूलर्स वीनस, मून एंड राहु है. ट्रांसिट चार्ट में. हाँ नहीं, ट्रांजिट में नहीं, नेटल चार्ट में. वो मदर का. हाँ मदर का. अब ये जो वीनस, मून एंड राहु है, ये बच्चे का असेंडेंट बनेंगे. किसका? चाइल्ड का असेंडेंट, चाइल्ड के असेंडेंट बनेंगे ये. वीनस, मून राहु. हाँ जी. अब वीनस तो साइन लॉर्ड है, इसको छोड़ दो. स्टार लॉर्ड मून है और राहु है, यानी मून राहु दो प्लैनेट्स हैं जो असेंडेंट में आपके को रूलर्स बनेंगे चाइल्ड के. सर वेनस वीक हो गई ना सर. वीनस वीक है, हो सकता है वो भी, इवन इट कैन बी देयर. तो वेनस छोड़ना चाहिए सर. वीक है ना, बिकॉज वीनस इज अपियरिंग इन नेगेटिव कस्प. यस सर. Venus is weak. Yes sir. Right? So that Yes, is sir. why we are not taking Venus. Venus is appearing in 4 and 10. Okay. So that is why Venus is not taken. Moon and Rahu are there. So these are two planets which can be the ascendant co-rulers of the child. And the second one is that if you look at Rahu, Rahu is in, Mars is in star, Rahu star. So Mars can be another planet. And if you look at Moon, Sun is in Moon star, Sun can be the other. Mercury is in Moon star, it can be the other. So we have three more planets which can co-rule the ascendant. One is Sun, second is Mercury, third is Mars, fourth is Moon, and fifth is Rahu. So these are the planets which will co-rule the ascendant. सर एक बार बता दीजिए सर. Okay. And now Sir, one more point. एक बार बता दीजिए सर. I'll just repeat it. Look here. The co-rulers of the fifth cusp are Venus, Moon, and Rahu. In mother chart. Now what is the rule? The rule is that the planets which will co-rule the ascendant of the child will be the co-rulers of the fifth cusp of the mother. Okay. Yes sir. Which is Venus, Moon, and Rahu. Venus, Moon, and Rahu. Right? Now, okay. Now, if you look at Venus I have rejected. It is sign lord. It is weak. Otherwise, also it is weak. It is not a significator. So I have not taken Venus. If I refer to Moon and Rahu, now Sun is in the star of Moon. Mercury is in the star of Moon. Two planets. Jupiter is in the sub of Moon. Third planet. Sun in the star of Moon. Mercury in the star of Moon. And Jupiter in the sub of Moon. Three planets. Then I take Rahu. Mars in the star of Rahu. And Ketu in the sub of Rahu. Two more. चार्ट में चाइल्ड चार्ट में मदर चार्ट में
how many planets we can have as the co-ruler for the ascendant of the child? One is Moon, other is Rahu, third is Sun, fourth is Mercury, fifth is Jupiter, and sixth is Ketu. So out of these 6 planets, any 4 can be the co-ruler of the ascendant of child. Now if you look here, Mars is there, Jupiter is there, Rahu is there, but Jupiter I am not selecting as sub-sublord, because the sub-sublord should be the one which signifies all the planets, which signifies all the houses, 2, 5 and 11 should be there. So that is why, because though Jupiter is giving a promise through Saturn and Moon for 5 and 11, yet at the same time, instead of Jupiter, we are preferring here Mercury, because Mercury is much stronger than Jupiter. So if you change sub-sublord to Mercury, it comes out to be 10, 30, 19, 290. That is the reason why we are doing it. See, the selection of sub-sublord is very important. Sub-sublord has the same meaning, same kind of signification as the Sukshma and Prana lord. Almost you have to treat the sub-sublord in the same way as you have treated Sukshma and Prana. For Prana lord, no negative cusp should appear. If negative cusp are appearing, we have to leave that Prana, because we say that Prana lord is very weak. Right? So here also, while selecting the sub-sublord, Jupiter I am rejecting, because Jupiter is not appearing in 2, not in 5, not in 11. Now the question is that why Jupiter is taken as a star lord? The answer to this question is because if you look at the cuspal co-rulers of the 5th cusp, and you see that which planets they are star and sublord, then Jupiter appears here. Jupiter is, in the sub of Moon. And if you look at Moon is giving us both. It means Jupiter is indirectly related to 2 and 5. So as a star lord, it is okay. See, look here. One simple way to remember is Rashi lord behaves like what Dasha lord does. Is it clear? मूर्ति जी, एक बहुत सिंपल मेथड है इस बात को याद रखने का, टू रिमेम्बर इट. जो राशि लॉर्ड होगा वो दशा लॉर्ड की तरह बिहेव करता है. इसीलिए दशा लॉर्ड क्या होता है, या पॉजिटिव होता है या न्यूट्रल होता है. इसका मतलब अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर 2, 5, 11 में से हाउस मिल जाए तो इट कैन बी ए राशि लॉर्ड. ओके. जो स्टार लॉर्ड है ये हमारा स्टार लॉर्ड की तरह ही बिहेव करता है, यानी इन्वॉल्वमेंट लेवल का. अब इन्वॉल्वमेंट लेवल में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सब चलेंगे. इज इट क्लियर? जो हमारा सबलॉर्ड है वो सबलॉर्ड की तरह ही बिहेव करता है, यानी इसमें पॉजिटिव हो बहुत अच्छा है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव का कमिटमेंट हो रहा है, और उसका फाइनल कंफर्मेशन अगर सबलॉर्ड जो है वो देगा. It will be given by sub-sublord. Now this is one simple way you can remember that how these are to behave. Rashi lord, star lord, sublord and sub-sub level. At sub-sub level we can have no negations. If you are having negations at sub-sub level, then it may give the event, but it is it has very weak potential, thereby the chances are less. Now if instead of this, because why I am saying so, the sub-sublord of the ascendant change within few minutes. That is why changing the time here by few minutes will not make any difference at all. Few minutes or few seconds. Only slow moving planets, they will take 1 or 1.5 minutes. The fast moving planets hardly change within 10 to 20 seconds or 30 seconds. So that will not make much difference. So that is how we calculate. So that is why instead of Jupiter, what we have selected here is, we have selected here Mercury, because Mercury is much stronger. Why Mercury is stronger? Because Mercury is in Moon star, Venus sub and Jupiter sub. Sir, one more thing. Promise is very strong. After fixing the Mercury as sub-sublord, it is okay, what you said. Let us, one more thing. The planets co-ruling the ascendant of the child,
planets co-ruling the ascendant of the child should be the significator of 1, 7, 10. हाँ, ये सब देखो, आप कैलकुलेट करो, सब देंगे। जब चाइल्ड का चार्ट आपको इसको Ascendant. 5 से रोटेट करोगे, जब नेटल के चार्ट को इस टाइम पीरियड पे ना नया चार्ट बनाना पड़ेगा ना, you will have to make another chart for 23/9/2004, 10/30/19/290, and then when you check 1, 7 and 10, they will all be satisfied. इससे भी देख लो, satisfy हो जाएंगे। क्यों रोटेट करना, फिर रोटेट करो या ये नया चार्ट बना लो सर। मेक ए न्यू चार्ट फॉर 23/9/2004, 10/30/19/290, 23/9/2004, 10/30/19/290. Make a new chart and then you check 1, 7 and 10. They will be all satisfied. क्यों रोटेट करना, वो असेंडेंट ऑफ द चाइल्ड है ना। हाँ, तो आप इसी को नया चार्ट बना लो सर, पुराना रोटेट ना करो। मेक ए न्यू चार्ट 23/9/2004, 10/30/19/290 and then you check 1, 7 and 10 rule, सब पास हो जाएगा। 19 ऐसा 23 सितंबर 2004 चार्ट बनाना है। यस, हाँ, नया चार्ट तो आप 1, 7, 10 रूल पास हो जाएगा। अच्छा, 1, 7, 10 रूल पास हो जाएगा सर। अब देखो सर, आपने एक पॉइंट और पूछा था यहाँ पे, मूर्ति जी। मूर्ति जी, मूर्ति जी, एम आई ऑडिबल? अब मूर्ति जी ने यहाँ एक पॉइंट रेज किया था कि जुपिटर सब लॉर्ड क्यों नहीं लेंगे हम, वाई वी आर नॉट सिलेक्टिंग जुपिटर सब लॉर्ड। Another way to explain it. Now, if you take Jupiter as sub lord, then Jupiter is no way related to Sun in the natal chart. If you check the natal chart, it is not related to Sun. Jupiter is in Saturn star, Moon sub and Saturn sub. No way related to Sun. And Sun is in Moon star, Mercury sub and Venus sub. No way related to Jupiter. So it means that Jupiter has no connection, no link with Sun. मूर्ति जी, कहाँ गया मूर्ति जी? मूर्ति जी, हाँ जी, वेर एनी हाउ। Now, do you get this point, please? Murthy ji raised a question that why we are not selecting Jupiter. One explanation I have already given. Now the second explanation for the same thing in a better way and a simple way. If you look at Jupiter in the natal chart, it is not related to Sun. Is the chart there on your laptop screens? Is the chart there on your laptop screens? हाँ जी, लैपटॉप पे चार्ट है क्या ये? सर जुपिटर चार्ट है, मून स्टार लॉर्ड सैटर्न ऐसे ही वही है सर। कहाँ है जुपिटर? साइन लॉर्ड मून स्टार लॉर्ड सैटर्न, ये नेटल चार्ट। हाँ, नेटल चार्ट में जुपिटर, स्टार लॉर्ड सैटर्न, सब लॉर्ड मून एंड सब लॉर्ड सैटर्न। सब लॉर्ड सैटर्न, यस सर। It is nowhere linked to Sun. There is no Sun. Okay, and look at Sun. Is there Jupiter? No. It means Jupiter cannot be selected as the sub-lord. Right? At point now of I view, change it to next.
Why do you Are you taking next sun? to Saturn? At the point of view, sun, why do you taking? Sir, Like, sun कौन सर मून का स्टार लॉर्ड कौन है? सन है। moon star Jupiter. मून स्टार लॉर्ड नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हो? आप ट्रांजिट में देखोगे ना, मून का स्टार लॉर्ड सन है। Moon star lord sun. हाँ, Yes sir. Okay, okay, सन। ओके ओके। okay. Yes sir. Now the ascendant sub lord should be related to sun. Oh, अच्छा. It is in the natal chart, you have to see. Okay. Okay. Now ठीक है. the next sub lord is Saturn. Fine. Look at Saturn. Is there any Jupiter in Saturn? Yes sir. Sign lord. कहाँ है सर? ये वाला नेटल चार्ट में है. नेटल चार्ट में जुपिटर, सैटर्न में जुपिटर कहाँ है? सैटर्न में जुपिटर नहीं है. नहीं है। और जुपिटर में सैटर्न है? यस सर. स्टार लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है ना। लेकिन हमने रिलेट किसको करना है? हमने तो सैटर्न और सन को रिलेट करना है। अब सैटर्न को सन से रिलेट करें तो सैटर्न में सन है? सैटर्न में सन नहीं है. हाँ, सैटर्न में सन है सर, एज ए साइन लॉर्ड. सैटर्न में सन कहाँ है? साइन लॉर्ड नहीं लेना ना, स्टार सब और सब देखना है कहीं पे? ठीक है. नहीं है ना। अब सन में देखो, सैटर्न है? नहीं है सर. नहीं है। अब मैं इसको फॉरवर्ड करके मरकरी चेंज करता हूँ। अब देखो, सन में मरकरी है? सन में मरकरी है, एज ए साइन, एज ए सब लॉर्ड. हाँ, हो गया रिलेट? हाँ, रिलेशन हो गया. हो गया। आप देखो टाइम क्या आ गया, 10:30 to 90. ओके, इज इट फाइन? Right, any questions now? 10:30, yes. 10:30 to 90. So the best way is that you simply correlate, link the ascendant sub-lord with the moon star lord which you get in the transit and check it in the natal chart. If there is a relationship in the natal chart, then that particular sub-lord is okay, and if there is no relationship, keep on changing it till you get a planet that is related to the moon star. Right? Yes sir. So this is how you get the time 10:30 19 to 90. Now you can recheck it. You can do the transit yourself and check it out and find out you will get the same time. Our primary focus has to be on the moon transit, and in moon transit the main focus has to be on the sublord and sub. Right? Blood and sublord along with connected with the fifth cusp corollars. Yes. Okay. अब सारे हो जाएंगे ना, आप देखो सब हो जाएंगे। Okay. सारे कोर रूलर्स हो जाएंगे। देखो, हमें सन चाहिए था, हमें मरकरी चाहिए था, सन चाहिए था, मरकरी चाहिए था, जुपिटर चाहिए था और केतु चाहिए था, और मून और राहु हमारे पास है। सो 6 में से एनी 4, मार्स इज देयर, जुपिटर इज देयर, राहु इज देयर, मरकरी इज देयर, ऑल आर रिलेटेड। As possible as fifth cusp of corollars to be meet in as a ascendant corollars in the child chart. Yes. Okay. Now, I have already written this topic for Murty ji's magazine, which will, I think, come on 2nd of this month, April. Right? Over there, I have given the childbirth all details related to this, that how you are to do, how you are to calculate. Whatever you discuss, these type of points are there, sir. Yes. Okay. Yes, I have discussed it. Okay. I have discussed all these points. Okay, thank you, sir. Right? Now, if you have questions, you can put me questions.
Is there any question? Anybody? No, sir. Now is it clear? Now is it clear how we have taken? Clear, sir. Clear, sir. Why Mercury is taken as sub-lord, right? Yes, yes. Focus on the natal chart. Find out the relationship between these planets and check it out that which can be there. What time it is there. So that will be the answer. Right? Yes, sir. मूर्ति जी कहाँ है? नहीं है, लाइन पे नहीं है। मूर्ति जी लाइन पे नहीं है क्या? इज मूर्ति जी ऑनलाइन? नहीं सर, आ गए सर, आ गया सर। मूर्ति जी, हाँ सर बोलिए। मूर्ति जी, आपका ये क्वेश्चन था कि जुपिटर सब लॉर्ड क्यों नहीं लिया? हाँ, एक आंसर तो मैंने दे दिया था। हाँ, अब दूसरा आंसर देखो कि जुपिटर का रिलेशन होना चाहिए सन के साथ। ये कहाँ होना चाहिए? नेटल चार्ट में। नेटल चार्ट में जुपिटर में सन है? नहीं है। सन में जुपिटर है? नहीं है। ओके, इसका मतलब जुपिटर सब लॉर्ड नहीं हो सकता। राइट सर? राइट सर? नाउ वी चेंज इट टू नेक्स्ट वन, सैटर्न। सैटर्न का सन से रिलेशन। सैटर्न में सन है? कहीं भी नहीं। सन में सैटर्न है? नोवेयर। ये भी नहीं हो सकता। नाउ आई चेंज इट टू नेक्स्ट, मरकरी। सन में मरकरी है? यस। राइट सर? That is why Mercury is selected as the sub-lord. की टू लग में वैसा नहीं लिखा, क्या लिखा बोला तो सर उन्होंने आज जुपिटर स्टार लॉर्ड, वी नीड नॉट सेलेक्ट अगेन, सो आई हैव सेलेक्टेड मर्क्यूरी बोलता है। नहीं सर, वो उसने दिया नहीं है एक्चुअली ना। की टू लर्न में उन्होंने ये पॉइंट लिखा नहीं, विच दे शुड हैव एलैबोरेटेड, दे हैव नॉट रिटन। सीधा दे दिया उन्होंने ना, दे हैव स्किप्ड ओवर द पॉइंट। बेसिकली दिस इज द रीजन व्हाई मरकरी सिलेक्टेड एज द सब-लॉर्ड। और मरकरी भी वैसे भी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है एज कंपेयर टू जुपिटर, एज कंपेयर टू सैटर्न। इज ए स्ट्रॉन्गर सिग्निफिकेटर, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। सो इसीलिए मरकरी, वैसे भी मरकरी को हमें रिलेट करना, लिंक कर, वी हैव टू लिंक इट टू मून स्टार, दैट इज ए मस्ट। मून स्टार के साथ जो है वो लिंक करना है। अब मून स्टार के साथ देखो मूर्ति जी, फिफ्थ का सब-लॉर्ड क्या है? राहु। और राहु देखो क्या है? सन है। तो सन से रिलेट हो गया। इसीलिए हम जो सन को मून का स्टार ले सकते हैं। अब हम मून के स्टार कौन कौन से ले सकते हैं? इट वुड हैव बीन बेटर इफ वी सेलेक्ट द सब-लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ cause एज द मून स्टार लॉर्ड। दैट इज वन पॉइंट। नाउ instead of Rahu, which other planets we can select? Rahu is Mercury and Sun. It means we can select here Sun, we can select here Mercury. So Mercury, Sun and Rahu are three planets which can be taken as the star lord of Moon. अब मून का ट्रांजिट आपने फिक्स करना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको तीन ही प्लैनेट फिक्स कर सकते हो। एक सन फिक्स कर सकते हो, एक मरकरी फिक्स कर सकते हो, एक राहु फिक्स कर सकते हो। जब तक ये तीनों में से कोई एक प्लैनेट नहीं आएगा, वो ट्रांजिट पास नहीं होगा। आप another tip sir, another tip to get the same answer. Right sir? Sir, what you have told, just will you please once again explain, sir? The last point. Last point. From where the sub-lord that I have selected. Sir, we started with Jupiter.
sub lord. Then we started looking at the link between Jupiter and Sun. In transit chart में. ट्रांजिट चार्ट में जुपिटर सन, लेकिन इसको देखना कहाँ है हमें? नेटल चार्ट में. नेटल चार्ट ऑफ मदर. हाँ, उसमें देखना है ये लिंक है कि नहीं है. इसमें नहीं चेक करना. वी हैव टू सी इट इन द नेटल चार्ट. जुपिटर कैसा देखना? जुपिटर का सन से लिंक इन नेटल चार्ट. नहीं, जुपिटर से सन नहीं, सन से जुपिटर भी नहीं. हाँ जी, नेटल चार्ट में, मदर चार्ट. नेटल चार्ट, मदर चार्ट, करेक्ट. उसके बाद सैटर्न देखो. सैटर्न में सन नहीं, सन में सैटर्न नहीं. उसके बाद मरकरी देखो. मरकरी, सन इज इन मरकरी सब. ओके, लिंक हो गया, लिंक हो गया. ओके ओके, दिस इज राइट सर. एक्चुअली क्या इसमें गलती करते हैं हम लोग जो है, ये जो सब लॉर्ड है ना, सन का और मरकरी का रिलेशन ट्रांजिट में देखते हैं. ट्रांजिट में नहीं देखना, नेटल चार्ट में देखना. नहीं, ट्रांजिट में देखा है, इसलिए वो गलत हुआ. हाँ, इसीलिए तभी बोल रहा हूं मैं. दैट इज व्हाई दैट मिस्टेक वाज कमिटेड. नेटल चार्ट में देखना. नेटल में देखना, मदर के चार्ट में. और दूसरा देखो, मून स्टार लॉर्ड शुड बी रिलेटेड टू द फिफ्थ सब लॉर्ड. बच्चे का मून स्टार लॉर्ड. हाँ, ये जो मून स्टार लॉर्ड है, दैट शुड बी रिलेटेड टू फिफ्थ सब लॉर्ड. बच्चा का मून स्टार लॉर्ड सन. सन शुड बी रिलेटेड टू राहु. राहु इज सन. Rahu sun. Rahu acting as star lord. राहु इज सन. Yes, yes. ये रिलेट हो गया. अब इसका टाइम देखो, अब 10:30, 19 to 90 आ गया. 19 to 90. Okay. 10:30. इन्होंने 10:30, 19, 19290. ये एग्जैक्ट टाइमिंग है सर. उन्होंने आगे पीछे दिया होगा टाइम, जो भी दिया. वेरी गुड, वेरी गुड. राइट सर. चार्ट इंटरेस्टिंग है ये वाला मूर्ति जी. इसे एन इंटरेस्टिंग चार्ट. एक्चुअली क्या है मूर्ति जी, जो ये ट्रांजिट है ना, ये बहुत ट्रिकी रहता है. ट्रांजिट इज वेरी ट्रिकी. ट्रांजिट इज वेरी ट्रिकी. अदरवाइज बाकी तो सिंपल है. यहाँ पे सूक्ष्म प्राणा पे फोकस करना है और हमें पता केतु में हो जाएगा, या 22 to 24 के बीच में हो जाएगा. द क्वेश्चन इज व्हेन इट विल हैपन. आफ्टर लर्निंग इट विल बी वेरी इजी, बट बिफोर. हाँ जी मूर्ति. हाँ, ये तो है, ये तो है मूर्ति जी. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट मूर्ति जी. इफ वन कीप्स ऑन डूइंग इट, you get perfect. But you cannot be 100% perfect, but you keep on improving. Okay. ये सारा पॉइंट मूर्ति जी मैंने उसमें जो आपकी मैगजीन में आना है ना, अब ये मैगजीन में जो आना है, उसमें जो चाइल्ड बर्थ दिया है ना, उसमें ये सारा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है. I have given all points. I have given all these points. So I think it will be an advantage to everybody. If they go through that topic, they will come to know ki how to select Sukshma Prana, that is one. Then how to advance in the transit and how to get the exact transit. वो भी लिखा हुआ है मैंने उसमें. It is attached. Your article is published. हाँ, उसमें चार्ट्स भी दिया हुआ है, so that they can understand. I think if they go through it, they can understand कि हमने करना क्या है. So then they can do it of their own. मैं सबको यही कह रहा था मूर्ति जी कि they should try it once again. Once again they should try it and try to get the same time.
10/30, 19/2/90. By starting from 23rd 9/2004 up to this, they should try to get कि कैसे करना है ये. If they practice 1 or 2 times, I think they will understand that how to check the transit. Main focus has to be on moon and the ascendant, nothing else. Sun जहां मर्जी जो मर्जी आए, doesn't make any difference. अब देखो ना, सन का साइन लॉर्ड चेंज नहीं होना. चलो ये तो लकीली इट इज मरकरी. मरकरी इज ए सिग्निफिकेटर, सन इज ए सिग्निफिकेटर, मरकरी इज ए सिग्निफिकेटर. जुपिटर एज सब लॉर्ड इज वीक, but we have no options. We can't change it, because if we try to change the Jupiter sub lord, I think it will take a pretty long period of time. So we can't afford to change it. We will not focus on it. Once we know the date, it is 22nd 9/2004 21,052. So then we have to focus only on number of days. Moon transit has to be taken. We have not to focus on sun. Sun focus तब करना है जब हमने month निकालना हो. Out of 12 months, which one is the fruitful month where the event is likely to happen? Only then we have to use it. Otherwise, no need. And one thing more important, Rashi Lord, sun in which sign? If this sign out of 2, 5 and 11 gives me 2 or 5, any one of these, it is okay. 2, 5, 11. तीन में से कोई एक आ जाए, it is okay. Anyone? हाँ, 2 and 5 is more important. 2 and 5 is more important. Rarely you get 11. Out of 3, you can select any 2. Any 2. Yes, any sir. one. Either in 2 or in 5. Because 5 is the primary cusp. Second is the delivery of child. Any addition of child to the family. So 2 and 5 are important. 11 is fulfillment of desire. That is not important. It is only for, planets which move slowly. उनके लिए चलता है ये. Jupiter हो गया, Saturn हो गया, then it will do. अब मून का ट्रांजिट देखो सर, जुपिटर के साइन में है, और जुपिटर is nowhere giving us 2, 5 and 11. Now here, why we have selected Jupiter? Because Ketu is in second cusp and Ketu is Jupiter. So that is why we are selecting it. It means Jupiter is giving us 2 indirectly through Ketu. That is why we are selecting Jupiter as the Rashi Lord. नहीं तो मूर्ति जी, यहाँ भी तो कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, आपने जुपिटर क्यों लिया जब जुपिटर 2, 5, 11 नहीं दे रहा. तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि राशि लॉर्ड ने बिहेव कैसे करना है लॉर्ड की तरह. अब जुपिटर देखोगे आप तो केतु सेकंड कस्प में पोजिशनल स्टेटस के साथ पॉजिटिव है, और केतु इज जुपिटर. इट मींस presence of Ketu in second cusp is as good as presence of Jupiter in second cusp. So Jupiter is giving us 2. That is why Jupiter sign is okay. Nothing wrong with it. Nothing wrong with it. Now look here, Jupiter is in Mercury sign. Absolutely okay. Nothing wrong with it. सारे planets देख लो आप. They are all in signs which are giving us 2 or 5. Mercury is there. Mercury is giving us 11. But Mercury is in a star of moon, which is giving us 2 and 5. Right? Jupiter in 2. Mercury in again 2 and 5. Sun is there. Sun is in... ना ये तो Mercury में आ गया ना. Mercury is in Sun. Sun is nowhere in 2, 5 and 11. But Sun is in Moon star. Moon star. Moon is giving us 2 and 5. तो ये सारे planets 2, 5, 2, 5 देंगे. हाँ जी मूर्ति जी, Okay. करें क्लोज.
Okay, Current sir. close, sir. Any question? Any question, sir? It was nice listen to your class, though I could understand only a bit out of it, what you were telling, what you were explaining, because languages I'm not, language is not known to me. I'm not familiar with the language. Yet I could make out from what you were saying by looking at the chart, what you were telling.